सो आज हम SQLI देखते हैं एंड SQL इंजेक्शन में दिस इज़ काइंड ऑफ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। और यहाँ पे हम बैकएंड सर्वर से मतलब जहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर होता है वहाँ से हम कुछ डेटा निकलवाने की कोशिश करते हैं बिकॉज आपने जो आपके जो इनपुट्स हैं उन पर सही से वैलिडेशन नहीं करा हुआ है। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू मेक some changes to this thing. So let me show you first कि SQL इंजेक्शन काम कैसे करता है, राइट? तो ओके एंड there you can see. So this is a kind of thing which is going on at the back end. So एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 डालूंगा, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एडमिन शो कर रहा है, राइट? व्हाट इफ मैं यहाँ पे 2 डालूंगा एंड सबमिट कर दूँगा। So what it is showing, first name and surname, right? So there are two things that are being shown to me. All right, what if I put 5? So 5 ID तक available है, यहाँ पे 6 मैं input करूँगा, so there is no information regarding 6, right? So what I can do is अगर मैं यहाँ 1 की जगह एक 1 के साथ एक सिंगल कोट भी डाल दूँ, सबमिट कर दूँ, so here you can see there is an SQL syntax error. So यही एरर हमको जनरेट करवाना होता है कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे हम SQL इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं या नहीं, राइट? ओके, तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, जब मैंने यहाँ पे 1 के साथ एक सिंगल कोड भी इनपुट कराया, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा ये जैसे यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड सर नेम आ रहा है फ्रॉम यूजर वेयर यूजर ID इक्वल्स टू 1, right? So what I can do is this thing will be what if I control X? Okay, 1 second. So this is how this query will go if I just input 1, right? So this is how ये काम करेगा कि हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए. This will be an normal SQL query, right? And यूजर्स टेबल में से उठाओ जहाँ पे यूजर ID 1 है, right? So this is a very normal statement, but what if I put an SQL injection there? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है this thing, control C, and let me go to this thing, control V. So this is a kind of input I used here. हुआ कि यहाँ पे मतलब ये इनपुट कर क्या रहा है, ये एक ट्रूथ है 1 और 1 इक्वल्स टू 1, और सही में ये ट्रूथ है भी, तो आपका यहाँ पर आपको 1 दे रहा है, राइट? सो हाउ दिस थिंग वर्क्स, मैंने यहाँ पे एक ट्रूथ दिया, सबमिट करा, एंड मेरे पास जितनी भी आईडीज थी वो उन सब का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो गया। तो ये हुआ कैसे, अगर हम यहाँ पे चेक करें ये हुआ कैसे, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रूथ। एंड अब यहाँ हो ये रहा है कि चेक हो रहा है कि 1 जो ये ट्रूथ है यहाँ पर होगा क्या, ये ट्रूथ हर यूजर्स टेबल में हर यूजर आईडी के पास जाएगा एंड कंपेयर करेगा क्या यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो निकाल सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक ट्रूथ वैल्यू है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या करेगी, आपकी सारी आईडीज के लिए ट्रूथ होगा वो, तो उसने क्या करा, सारी ही इंफॉर्मेशन हमें निकाल के दे दी, ठीक है? आपके टेबल में आपके पास डिफरेंट आईडीज हैं, देन डिफरेंट आईडीज के लिए डिफरेंट फर्स्ट नेम्स हैं, डिफरेंट लास्ट नेम्स हैं, राइट? और अब वहां पर एक ट्रूथ जाता है एंड ट्रूथ इज ट्रू फॉर फर्स्ट आईडी एज वेल, truth is true for second ID as well, third ID as well, fourth, fifth and so on. और हर एक आईडी के लिए वो ट्रूथ है, दैट्स वाई ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास आ गई, राइट? अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आपके पास आता है कि जब आपने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली, देन आपके पास एक चीज़ आती है
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो ये तो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल, एक तरीके से आपने यहाँ पे डेटा डंप करवा दिया, बट द थिंग इज व्हाट इफ दिस ट्रूथ डोंट वर्क। अब वहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं, तो कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंगल कोट, आपने सिंगल कोट दिया, यहाँ पे एरर आया। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप इस एरर को बैलेंस करें, और एरर को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है आप यहाँ पर हैश लगा सकते हैं। एंड द थिंग इज एट फर्स्ट आपको यहाँ पे ये भी चेक करना होगा कि क्लोजिंग किस तरीके की है। तो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमने हमें सबसे पहले यहाँ पे सिंगल कोट देता हूँ, और सिंगल कोट से बढ़िया हम यहाँ पे देते हैं बैक स्लैश, ये देखने के लिए कि हमारी क्लोजिंग किस तरीके की है। तो सबमिट करा मैंने, एंड सबमिट करने के बाद यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग पता चल गई, दैट इज सिंगल कोट की यहाँ पे क्लोजिंग है, राइट। लेट मी कम बैक नाउ, सिंगल कोट से मैंने क्लोज किया, एंड द थिंग इज मेरे को ये बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए मेरे पास, अब बैलेंस करने का क्या मतलब है, मैं जब यहाँ पे अगर हैश दे देता हूँ तो आगे की लाइन को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, या फिर अगर माइनस माइनस प्लस देता हूँ तो सिमिलरली सेम थिंग हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स सी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे वर्क करता है या नहीं। सबमिट करा, एंड आई थिंक इट डिडंट वर्क फॉर सम रीज़न, बट व्हाट इफ आई, मैं यहाँ पे हैश यूज़ करूँ एंड सबमिट करा, तो वन यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट सही से दे रहा है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग मेरे को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ऑल राइट। तो अब मैं यहाँ पे वन दिया था मैंने, तो वन एंड देन दिस थिंग। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स अवेलेबल हैं, राइट। सो ऑर्डर बाय, इस पेज पे कितने कॉलम्स अवेलेबल है, जैसे फर्स्ट नेम एंड सर नेम माइट बी दो कॉलम, और यहाँ पे आईडी तीन कॉलम, हो सकता है यहाँ पे तीन कॉलम हो, और हो सकता है ज़्यादा कॉलम्स हो, आई डोंट नो, राइट। मतलब इस पेज पे कितने कॉलम्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो मुझे देखना है। तो मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर बाय थ्री दे दूँ एंड सबमिट, देन व्हाट इट इज सेइंग, okay, I am using minus minus plus, what if I use hash, so unknown column 3 in order clause, and what if I make it 2 and submit it. So this didn't give me error. So there are two columns that have been reflected, might be first name and the last name, right. Let me see the source. When I will see this source, here I have first name and last name from users, where user id equals to $id, right. So that is what happening. Okay, second thing what I can do is, now I have to use this thing, and let me use union this time. Union all select, and since there are two columns, null comma null, right. And now I will submit it, and what will happen is, uh, there is admin. Okay, so it took the value null, it didn't give me any error. Okay, now make it union this time, and instead of null just give, एट फर्स्ट मैं यहाँ पे ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे इन कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप चेक करना है तो मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ। अगर यहाँ पर कैर टाइप का डेटा टाइप होगा, देन मतलब तो ये मेरे को बता देगा। सबमिट करा, एंड इट डिडंट गिव मी एनी एरर, सो इट हैज़ character type of database. But what if I use
what if I use union or select, and just let me use 1 comma 2, and let me just enter, and it didn't give me error for this either, right? So the thing is, this is kind of varchar type of data type that is being in use here, so it's not giving me any error. Now second thing, what I can do is, I can see uh, database version and database name, right? And let me submit it, and here you can see database name is DVWA and database version is this thing. So it is working fine. And right now what I can do is, uh, अब मेरे को यहाँ पे अब मैं यहाँ क्या करवा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ परसेंटेज, एंड आफ्टर परसेंटेज सो मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्वेरी क्या है. So this time what I did is I gave percentage, then instead of truth मैंने यहाँ पे 1 equals to 0 दे दिया है, परसेंटेज और 1 equals to 0, परसेंटेज देकर फिर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट दिया, जैसे 1 दे के मैं सिंगल कोट दे रहा था, परसेंटेज इज फॉर ऑल, राइट. देन मैंने 1 equals to 0 दिया, एंड देन व्हाट आई वांट इज, मैं दो क्वेरीज को ज्वाइन कर रहा हूँ. कौन सी दो क्वेरीज को? यूनियन, यूनियन से मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, और मेरी ये सेकंड क्वेरी है सिलेक्ट. फर्स्ट क्वेरी तो हमारी ये थी जो यहाँ पे लिखी हुई है सिलेक्ट. तो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम यूनियन से, यूनियन सिलेक्ट. एंड सेकंड क्वेरी इज, पहले कॉलम के लिए हमने नल दिया, एंड सेकंड कॉलम में हम कह रहे हैं कॉनकैट. क्या कॉनकैट करना है हमें? टेबल अंडरस्कोर नेम, और उसको कॉनकैट करा है हमने कॉलम नेम के साथ फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, राइट, डॉट कॉलम्स. सो हम इंफॉर्मेशन स्कीमा, क्या होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा? आपका एक ऐसा डेटाबेस, डेटा आपके जो माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है उसमें एक इंफॉर्मेशन स्कीमा होता है, और वो इंफॉर्मेशन स्कीमा का काम जस्ट इतना होता है, वो आपका सारा मेटा डेटा रखता है. सो मैं यहाँ पे अब क्या करवा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम टेबल अंडरस्कोर, टेबल नेम और कॉलम नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे. तो कॉनकैट का मतलब होता है दो जो आपके इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उनको ज्वाइन करवाना. तो यहाँ पे मैं 0,0x0a दे रहा हूँ बीच में, टेबल नेम और कॉलम नेम के बीच में, राइट, जिससे कि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि कॉलम नेम कहाँ से स्टार्ट है एंड टेबल नेम कहाँ से स्टार्ट है. देन फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स, अब इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स भी है इंफॉर्मेशन स्कीमा में, एंड इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स भी है. तो वेल दिस क्वेरी इज माय सेकंड स्टेप, राइट. तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पर मेजरली रहता है, जस्ट मैं यहाँ पे टेबल नेम्स निकालूं, राइट. तो क्या करता हूँ मैं कि अभी के लिए ये जो मैंने क्वेरी दे रखी है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, एंड यहाँ पर कॉलम्स की जगह मैं सिंपल बस इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स दे देता हूँ. सो this time I am working on what, where table name equals to users. No, यहाँ पे अब टेबल नेम की जगह आएगा आपका डेटाबेस डेटाबेस इक्वल्स टू DVWA, और या फिर डेटाबेस की जगह हम यहाँ पे टेबल स्कीमा यूज कर सकते हैं. तो टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू व्हाट, DVWA, right. So this must work when I will submit it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो टेबल्स के नाम आ गए हैं, गेस्ट बुक एंड यूजर्स. सेकेंड थिंग, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट मी, अब मेरे को यहाँ पे
एक इंटरेस्टिंग टेबल दिख रहा है, दैट इज यूजर्स। वही स्टेटमेंट देंगे जो हमने पहले दी थी, जो पहले मतलब मैंने एडिट करी थी। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए टेबल नेम, और टेबल नेम में से निकला टेबल नेम मतलब टेबल में कितने कॉलम्स हैं, तो यूजर्स टेबल में मेरे को कॉलम्स देखने हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम से इस बार इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू यूजर्स, एंड मैं इसको सबमिट करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं users table and user id is a column, users is again table and last name is your column, then these are all columns. So these much columns are there in this particular database, and what we are looking for, हम यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर मेरे को क्योंकि डेटा डंप करवाना है, तो डेटा डंप करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, परसेंटेज अगेन, एंड ओके, सो परसेंटेज और 1 equals to 0 union select null, and what I can do is यूनियन सेलेक्ट नल कॉमा कॉनकैट, और यहाँ से इसको खाली करना स्टार्ट करो, बिकॉज this time we want something else. What we want is we want first name and last name, or no, not first name and last name, we want user and password. So user comma 0x0a comma password, right, comma, let me make space again 0x0a, and this time what I want is let's take user id, user underscore id. So these things must be shown to me from this time I want it from not, I don't need these things. This must work without having this information. I want no, users, just users right now, and let me submit it and let's see it. Yeah, so this is my query, and here you can see that admin, and it is the password hash, and this is my id, second id, this is the username, and this is the password. So this is how I am able to dump whole data from this particular SQL injection. Now what if I increase the security to medium, submit, and let me see the SQL injection, and this time we have it here 1 2 3 4 5, right? What if I submit it? So all right, actually I can intercept this in my pub suit, and then I can do same thing. So this is not a perfect idea to protect SQL injection. What if I make it high security level and again see this and this time you have to change your ID from this particular different uh, window that has been opened. And what if I submit session ID is 1, okay, same thing, I wasn't able to perform uh, from this page, I am able to perform from this page. So no changes, this is not a high security level, this is just a uh, stupid method to try to prevent SQL injection. But yes, this must not be used again. Now second thing is we have SQL injection blind, okay. So अब हमें यहाँ पे blind SQL injection देखना है, and that too
देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये लो लेवल की आपकी सिक्योरिटी लेवल है, बट इफ मैं यहाँ पे 1 एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1, लेट मी सी, ये एरर देता है नहीं. ओके, दिस इज समथिंग weird. 1 submit, 2 submit. Okay, so this is only showing that this exists in database or not. I write 5 submit. What if I make it 7? No, so it's missing. 6 missing. Right. Next thing, 1 submit. Okay, so this is just showing me kind of. And what if I give, so it accepted, right? So it is showing me whether user ID exists in or not. तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कर पाएंगे कि अगर हम लगातार सिर्फ यूज़र आईडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस, मतलब यहाँ पे आप ट्रू एंड फॉल्स पे खेल लें कि अगर आपकी क्वेरी ट्रू होगी तो यहाँ पे वो कहेगा कि आपकी यूज़र आईडी एग्जिस्ट करती है, अगर वो फॉल्स होगी तो वो कहेगा नहीं करती. तो 1 एंड इसके साथ में देता हूँ और 1 equals to 1 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ हैश. So 1 equals to 1 is true. So I must use AND here, right? So both of these things must be true to give me this thing. I submitted, it didn't give me error. Now I make it 2 once, then so it's missing. Similarly, uh, other thing what I can do is if I use 7 again missing, right? So this is how it is working. And now how can, now database dumping and data dumping from this particular vulnerability is in manual is quite a long task, right? But we will perform it. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन और not or let's see, so we can use substring here, right? kind of ये क्या करेगा, आपको डेटाबेस का फर्स्ट वर्ड निकाल के दे देगा, राइट? तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, सी एंड यहाँ पे एस की यूज़ करा हुआ है. एस की यूज़ करना ना करना हमारे हाथ में है. मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम जानता हूँ DVWA. सो क्योंकि हमने पिछली बार भी सेम चीज़ करी है, मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ एंड जस्ट दिस थिंग विल बी देयर एंड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डी एंड मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ. यूज़र आईडी इज मिसिंग. ओके, and what if I submit this? Oh, sorry, it I didn't put the hash here. Let me remove the S key from here, right? And let's see whether this will work or not. I gave S or what? I must have given the D. Now remove this. I remove this S key. There must be a hash value here. Let's submit. It didn't work. Okay, I think working with S key is mandatory. So this is for the first letter in the first word of the of this thing. So what is the ASCII value of D? Let me check. ASCII value. Okay. ASCII table A to Z.
97 to 122. For D 68 and for small d 100. Okay, that's why it has given me 100 and my security level is low. Hmm. Okay, so hmm, yeah. So user ID exists in database, right? So this time it gave me true, but we can't do this whole day long. So what we can do is we can use our pub suit. So here I have my pub suit and let it start first. Okay, so ये यहाँ पे मेरा pub suit open हो चुका है, right? And next thing मुझे क्या करना है, इसको submit करना है. Oh, okay. So this gave me an error because I didn't change my proxy. Let me refresh it, or I must get back. Oh, okay. I think what I have to do is let me change my port number because on 8080 port my local host is running. So I have to edit this and okay. So this time is good. Now it must work. I submit this request. Here is my, let me send it to repeater, right? I want the whole name, and in real world scenario I might मतलब मेरे को हो सकता है कि मुझे ना पता हो कि डेटाबेस का नाम क्या है या मेरे को कोई आइडिया ही ना हो, तो फिर मैं यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म करूँगा. तो मैं इसको इंट्रूडर पे लेके जाता हूँ पहले तो, एंड इंट्रूडर पे जाके मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ. एंड डेटाबेस का नाम यहाँ पे देखो 1,1, राइट? डेटाबेस एंड देन कॉमा 1, right? So this is the place where I have to add this particular place, right? And this true into my uh, word list. Let's just use cluster bomb. Go to the payloads. On first field, use numbers and numbers from 1 to 10 and step 1. Okay. Then for second payload, you have to use again numbers, but this time you have to use from 97 or uh, 97 to 122 as we saw on one of the pages and with one value. Right, now what I can do is I think this is enough. Start attack. Alright, so we have different status, right? And here you can see that only 4 status have been come: 97, 100, 118 and 119. And this is one, that is D, 2 V, that is for 118, 3 119, that is for W, 4 for A 97. So these status told me that DVWA is the name of
database, right? And this is how you can perform for whole of our data dump, and the data dump will be simple enough. You can see here whatever we performed in previously, that all we have to do, but the thing is we have to use substring function again and again, and the substring function will lead us telling how we have to perform blind SQL injection. Here you can see whole queries that I perform, right? Sorry. All right, and that's all for SQL injection blind. And the thing is, for medium and high level, SQL injection is similar that we performed in here. Similar things have been given, right? So